सो व्हाट्स अप स्क्वाड, वेलकम बैक टू थंडर मास्टर गेमिंग्स लाइव स्ट्रीम। और आज लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ, अपने जैसे टाइटल देख लिया होगा। टुडेज वीडियो टाइटल इज AMD बिग नावी RX 600 सीरीज लॉन्च इवेंट। विल इट बीट RTX 3080? लाइक रूमर्स आ रहे थे लाइक कि इसके क्लॉक स्पीड लाइक 2.5 गीगाहर्ट्ज इजीली टच करे, लाइक इतने बूस्ट हो रहा है, ये वो हो रहा है। तो क्या ये हो सकता है? और हाँ, अगर डिस्टर्बेंस आ रहा होगा तो सॉरी फॉर दैट। बट बैकग्राउंड ऑडियो कैसा लगा, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक आपको कैसा लगा, उस पर बताता ना सारा मुझे। सो फिर मैं ऐसी और कमाल की चीज़ों को ला सकूँ यार। मतलब आप बता दो तो मैं लाऊँ इसको। लाइक लिटरली मेरा कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हद तक पसंद आया बैकग्राउंड म्यूज़िक जो ये था। बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक है ये। और लाइक क्या बताऊँ यार, ओपी बैकग्राउंड म्यूज़िक है ये। लाइक इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था मेरे स्ट्रीम में, लगन ही नहीं थे भाई कुछ। अभी टाइम हो चुका है 9:23 और मैं कुछ आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ। लाइक लाइव इंट्रैक्शन है ये स्ट्रीम। सो अब मेरे 60 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं चैनल पे, जैसे आप देख सकते हो। और जो है अभी मेरा एम है 100 सब्सक्राइबर्स का, और उसके साथ साथ ही मेरा एम है इस स्ट्रीम के लिए वो है 15 लाइक्स। यार 15 लाइक्स आपके लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तो करवा दो जल्दी से। बिकॉज अभी यार 100 सब्सक्राइबर और 15 लाइक्स बनाता है यार। मतलब अगर 60 और बोल देते तो वो है, बट मेरी जो वीडियोस है उस पर लाइक ऑलमोस्ट 80-90% लोग देखते हैं। और मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है वो भी। और मैंने जो डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन के एफिलिएट लिंक डाल के रखा है, अगर आप उस पर शॉपिंग करते हो तो चैनल का सपोर्ट मिल जाता है। और मैंने अपने PC स्पेसिफिकेशंस भी दिए हैं इसमें, तो कोई पूछना मत यार। PC स्पेसिफिकेशंस, यस। मेरा कभी कभी थोड़ा फंबलिंग हो जाता है, बट यार इट्स फाइन। और आपको अगर मुझसे कम्युनिकेट करना है, तो आप मुझसे मतलब कर सकते हो कम्युनिकेट थ्रू माई इंस्टा, दैट इज़ Ashish_11007 माई इंस्टा ID, एंड माई Gmail इज़ thundermaster110707@gmail.com। आपको अगर कम्युनिकेट करना है तो इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, या इससे और भी मेथड्स है, मैं बाद में आपको उसके बारे में बताऊंगा। सो गाइज़, अगर आपको चाहिए कि मैं इस टॉपिक पे लाइक अभी ये जो बिग नावी का लॉन्च इवेंट है इसके बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में थोड़ा डीप कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, बिकॉज जो मैं बनाता भी हूँ। और कल बात करूँगा मैं कि कल एक लाइव स्ट्रीम होने वाली है वापस से, जो कि होगी शायद से NVIDIA की 3070 के बारे में। यस, 3070 के बारे में 29 अक्टूबर को है। हाँ बराबर मैंने बोला डेट, और है तो देख लेना, लाइक अच्छा है वो भी। तो फिर अभी इधर मैं कुछ आपको चीज़ें बताता हूँ कि अभी ये जो स्ट्रीम में होने क्या वाला है। जैसे कि मैं इधर देख रहा हूँ, ये जो स्ट्रीम में होने वाला है कि लाइक जो डॉक्टर लीसा सू है, जो CEO है AMD की, अभी वो कुछ बड़े खुलासे करने वाली है। लाइक क्या बोल सकते हैं, लाइक RDNA2 जो पावर्ड ग्राफिक कार्ड्स है, जो कि हमारे प्यारे से हमारा जो PS5 जो है ना उसमें भी लगा है, AMD का ही उसमें CPU लगा है, GPU भी लगा है। सो AMD इंटेल से पावरफुल है, और इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम इंटेल टू AMD।
पहले ही बताता हूँ कि जो AMD है लाइक वो अच्छा थोड़ा लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करता है। लाइक अगर आप उसका टेम्परेचर उसका अच्छा हैंडल करते हो तो इंटेल की तरफ से क्या होता है, इंटेल का टेम्परेचर बढ़ता है, उससे टेम्परेचर इंटेल का बढ़ता है। लाइक इंटेल कुछ ज़्यादा ही हॉट रन करने लग जाता है, वैसे जैसे फिर वो हॉट रन करने लग जाता है ना, फिर वो कुछ काम का नहीं रहता। लाइक आपको पता है ना, लाइक जो जितना हॉट रन करेगा उसको इतना फिर डिक्रीज होता जाएगा। तो वो चीज़ है यार एक, सो वो कभी कभी एक प्रॉब्लम देती है। सो फिर तो यार इंटेल कैसे लाइक कैसे यार, कैसे मैं सोच रहा हूँ यार, कैसे यार, मतलब सोच के देखो एक बार कि जो चीज़ इतना गर्म हो रहा है वो इतना पावर कंजर्व कर रहा है, तो वो इतना लॉन्ग टर्म कैसे चल सकता है। लाइक मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। हाँ, तो अगर चाहिए तो मुझे बता देना, मैं इस पे भी वीडियोस लाता रहूँगा। और एक छोटा सा लाइक पॉइंट है, मैं कवर कर देता हूँ कि AMD क्यों नहीं 5 गीगाहर्ट्ज सर्च कर पाया। अगर 5050X को 5 गीगाहर्ट्ज सर्च करना तो कर देता। पावर जो है ना, इधर पावर मैटर्स द मोस्ट ओवर हियर इन दिस केस। सो जितना पावर उसका बढ़ता है वो उतना ही फिर उतना वो लग जाता है। लाइक उसका मैं बात करूँ तो फिर वो क्रॉस तो कर लेता 5 गीगाहर्ट्ज का बैरल, पर उसकी पावर बढ़ जाती है। तो AMD का क्या ना, पावर ज़्यादा बढ़े, लाइक वो 150 वॉट्स पे नहीं गया, 105 पे रुका और एक स्वीट स्पॉट में आपको अच्छा सा परफॉर्मेंस दे दिया। अगर हम इसको बूस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करें, इसको ओवरक्लॉक करें, तो ये 5 पॉइंट जा सकता है। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस बिकॉज ये मार्केट में तो अभी तक नहीं आया है। 5 नवंबर कुछ अप्रॉक्सीमेटली बोला था, तो उस टाइम तक ये CPUs मार्केट में आ जाएंगे और भी बस कुछ 1 मिनट में हम देखने वाले हैं एनवीडिया का, नहीं एनवीडिया सॉरी AMD का लाइव स्ट्रीम। फिर डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम पे मिलते हैं। ठीक है सर दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो सामने लाइव
my god, like literally man. Oh, गाना मत है जरूरी हो रहे और जितना भी आज ही कर रहा है क्या मीडिया को बीट कर पाएगा पता नहीं अगर क्या को मेरे ऑडियो मस्त लगता है ऑडियो है ना वो भाई एनिमेशन लाइक देखो इनका हर एक एनिमेशन देखो हर एक एनिमेशन लाइक अभी ये देखो लाइक तो वो ग्राफिक कार्ड के ऊपर से जा रहा था वो वाला एनिमेशन भाई ये बहुत ही अच्छी चीज़ है यार ये बूम भाई बैक सो चलो बूस्ट कर दिया अभी Welcome everyone. Thank you all for joining us today for this second half of our next-gen PC platform launch. I loved seeing all of your excitement when we introduced the Ryzen 5000 series a few weeks ago. It was actually the most watched launch video in AMD history. And I must say, we're very proud of what Zen 3 brings to gamers. But today is all about Big Navi. I'm really excited to show you the new RDNA 2 architecture and our full stack of Radeon Rx 6000 series products. As you know, we brought the first generation of RDNA architecture to market in 2019 with the Radeon RX 5700 XT. And with the combined launch of the 5700 XT and the Ryzen 3000 series, AMD became the first company to introduce a high-performance CPU and GPU together. And we delivered a winning combination of computing and gaming performance, including CPU and GPU of the year in 2019 from PC Gamer. Now, 2020 is really the year of the gamer. I know many of you can't wait to get your hands on the next-gen consoles. Whether it's the Microsoft Xbox Series X and Series S, or the Sony PlayStation 5, we are so proud that AMD is enabling these incredible gaming experiences, which is why we like to say that AMD is where gaming begins. Now, earlier this month, I showed you our new AMD Ryzen 5000 series, the world's best gaming processor. Our next-gen Ryzen processor combines absolute performance leadership in single-threaded performance, gaming, and creative workloads with leadership performance per watt. And for millions of you, it's a drop-in upgrade to your existing AM4 motherboard. Now, as successful as we've been with Ryzen, many of you have asked us to compete at the highest end of gaming GPUs as well. And today, we're ready to show you exactly what we've been working on. I'm so excited to show you the Radeon RX 6000 series. It's absolutely the most powerful gaming GPU we've ever built. I think you'll be pretty pleased with what you see. I often talk about the fact that we're on a journey, and we are on a journey. Just like with our Zen CPU architecture, we're on a multi-year journey in GPUs with our RDNA architecture. We designed RDNA specifically for gaming, and our first-gen RDNA products delivered 50% better performance per watt over our GCN architecture. We wanted to take another big step with RDNA 2 and deliver another 50% generational improvement in perf per watt. And with RDNA 2, we also set the very ambitious goal to deliver leadership gaming performance. And now, I'm very happy to show you for the first time, Big Navi. This is the chip at the heart of our high-end Radeon RX 6000 series. 26.8 billion transistors built with leading-edge 7nm process technology. Big Navi is our first product powered by RDNA 2. We have made incredible progress on the architectural front. And now let me turn it over to AMD fellow Laura Smith to give you more details on the architecture. Thank you, Lisa. Our graphics architecture roadmap has a clear goal: gaming leadership across the ecosystem. The GCN was a great architecture, but we knew we needed to rethink graphics and build the best engine for the future. We wanted to build a set of technologies that game developers could use across all platforms. The first major step was RDNA, introduced last year. RDNA was a new architecture and used a 7nm process node, which helped us with the large initial gains. We committed to you that our engineers had plans in the works for RDNA 2, and we would be back quickly with another significant improvement. By combining our expertise in CPU design, deep gaming history, and broad ecosystem partnerships, RDNA 2 is built to be the gaming architecture for all gamers across console, PC, and beyond. We had some very ambitious goals with RDNA 2. Significantly higher performance,
50% improvement in performance per watt, and new hardware features. Individually, each of these goals is challenging. When combined, they become extremely difficult because as you push performance, a natural side effect is more power. New features also mean more computation, further challenging both speed and power metrics. For RDNA 2, we made significant gains in all these areas. The compute unit is the core of the architecture. We advanced all aspects of the compute unit design, leveraging techniques first developed in CPUs. We deployed pervasive fine-grained clock gating, reimagined the pipeline to aggressively maximize performance while minimizing data movement. In combination, these elements made the compute units 30% more energy efficient, allowing them to be pushed faster. Gaming at 4K requires more data to be brought into the chip. The amount of data more than doubles as we move from 1440p to 4K. The more efficient the memory subsystem is, the higher fidelity the images are, and the more you can push the frame rates. We took a new approach to solving this technical challenge for gaming and deployed a graphics-optimized, high-density, high-speed cache based on the Zen L3 cache. We call this the Infinity Cache. The Infinity Cache minimizes DRAM bottlenecks, latencies, and power consumption. Our specialized Infinity Cache, combined with a 256-bit G6 interface, delivers more than twice the effective bandwidth of a traditional 384-bit G6 solution and at lower power consumption. High frequency is important for gaming performance. RDNA 2 is built with custom libraries and high-speed design flows, maximizing frequency in 7 nanometer. With RDNA 2, our silicon design and architectural improvements, we are able to deliver 30% faster frequencies in the same 7 nanometer process node. Pulling all this together, the RDNA 2 architecture beats our aggressive performance per watt goal, achieving 54%. With RDNA 2, we also focus on bringing new hardware features into the architecture. We partner closely with Microsoft on DirectX 12 Ultimate features including DirectX Ray Tracing, variable rate shading, mesh shaders, and sampler feedback. RDNA 2 will also support Microsoft Direct Storage API. We're excited about this new API that will enhance the gaming experience by significantly reducing game asset load times from large SSDs. We compared the performance of RDNA 2 to our prior generation, and when we put it all together, on average, RDNA 2 delivers double the performance and with great power efficiency. We are so proud of what we've accomplished with RDNA 2, and we are not stopping. The team is executing to plan, RDNA 2 is here, and the RDNA 3 team is well into execution. Let me welcome Scott Herkelman to show RDNA 2 in our new RX 6000 series products. Hello to all of the gamers tuning in, and welcome to our Radeon RX 6000 series product reveal. As a hardcore League of Legends and Borderlands 3 player and playing these games on our RX 6000 series over the past few weeks, I'm so excited and proud to be here with you today. Allow me to introduce you to our brand new AMD Radeon RX 6800 XT graphics card. The 6800 XT is purposefully designed to play all of your favorite AAA games at 4K and below resolutions, and at the highest quality settings available. It comes with 72 compute units and runs with a game clock of over 2 gigahertz. This card features a 2.25 gigahertz boost clock that pushes some of the highest frequencies we've ever achieved, all thanks to the incredible work done by our engineering team on the RDNA 2 architecture. The 6800 XT will also feature 128 megabytes of Infinity Cache that is power efficient while driving the bandwidth needed for high-resolution gaming, paired with 16 gigabytes of blazing fast GDDR6 memory.
you'll be ready for the most demanding high-resolution games that you want to play. And we've delivered all of this incredible performance with a total board power of just 300 watts. As you can see, the 6800 XT not only delivers on 4K 60 frames per second, but in most cases, it overperforms. We've been maxing out all the settings in games like Battlefield 5, Borderlands 3, and Call of Duty Modern Warfare, and the performance has just been awesome to experience. Let's take a look at how the 6800 XT competes head-to-head against the latest offering from the competition. Here, we compare their best API scores to our best API scores. The best versus the best. And as you can see, the 6800 XT trades blows and has some significant wins across a variety of titles. Compare their best. अभी तो 3080 320 watts and देखो और 6800 XT API scores to our best API scores. The best versus the best. And as you can see, the 6800 XT trades blows and has some significant wins across a variety of titles. Like इसमें like Shadow of the Tomb Raider और Resident Evil, Shadow of the Tomb Raider, Gears of War 5 और किसमें इक्वल है Doom Eternal, Borderlands में थोड़ा ऊपर है like graph. So and it does all of this at less power consumption than the competition. For the 1440p gamers out there, we have some great results for you too. Over the last several years, more and more gamers have adopted 1440p monitors as their display of choice. Here are the same games we showed you before, running the same best versus best API scenario. चलो Battlefield 5 पे देखो scores आप एक बार देख लो यार like कुछ अगर games में like Doom Eternal है और कौन सी गेम में बोल सकता हूँ Doom Eternal में है Division 2 में है like ये जो गेम है इसमें थोड़ा एडवांटेज Nvidia का है Resident Evil 3 है बट उसमें थोड़ा एडवांटेज है लाइक अच्छा खासा मार्जिन से तो एडवांटेज नहीं अच्छा खासा मार्जिन से आपको एडवांटेज देता है 135 और डिवीजन 2 में देता है और किसी में नहीं लाइक है एडवांटेज at 1440p resolution. I personally love seeing so many games running at over 100 frames per second with all of the settings maxed out. This is just an incredible amount of performance. All in all, the 6800 XT is a fantastic choice for enthusiast gamers. We even have more performance we are delivering with two very cool features. The first is a one-click overclocking button we built into our Radeon software package that we call Rage Mode. Now, Rage Mode automatically takes advantage of the overclocking headroom built into your GPU to give you every bit of performance it has to offer. And the second is made possible because of the fact that only AMD can deliver both high-performance processors and high-performance GPUs. We call this new feature AMD Smart Access Memory. AMD Smart Access Memory unlocks the greater amount of high-speed memory from the AMD Radeon Rx 6000 series graphics cards to the AMD Ryzen 5000 series processors, and it delivers additional levels of performance in games. Simply pair these components with our 500 series chipset motherboards, enable the setting in the BIOS, and the performance uplift becomes automatic. When you combine AMD Smart Access Memory with the one-click overclocking of Rage Mode, you'll get a boost in performance in many of the games you love. We're seeing up to a 13% performance increase, and that's before game developers begin to optimize for this new capability. Now, we know a lot of you absolutely love frames per second performance just like us. However, we can also improve the game experience by reducing latency. The differences of milliseconds of latency in a competitive game can be the difference between a major win and a major loss. Last year, we pushed the industry to recognize there was a better way to provide competitive gamers with less latency from mouse click to the screen, giving competitive gamers who own the RX 5000 series a serious leg up on their competition. Today, we are pushing the boundaries again and further reducing latency in competitive games for even better results. Combining the latest implementation of Radeon anti-lag with a FreeSync monitor can reduce lag in your DX9 and in your DX11 games. In Fortnite, for example, gamers can realize up to 8 milliseconds of latency reduction by simply enabling this feature in Radeon software. More recently, we introduced Radeon Boost,
a unique feature that's a step beyond anti-lag. For select games, Radeon Boost offers dynamic resolution in response to your mouse or controller inputs, leading to higher frame rates and, as a result, quicker responses to your input. Both Radeon Anti-Lag and Radeon Boost can be enabled via the Radeon software that comes with your graphics cards, and neither of them require a proprietary API or a game integration to provide latency-reducing benefits. As you can see, the combination of these technologies can contribute up to 37% latency reduction in highly competitive games like Fortnite running at 4K. Now, performance is king, but let's talk for a minute about how we are improving the visual experience as well. With full hardware support for DX12 Ultimate, the Radeon RX 6000 series is ready to enable ray tracing and variable rate shading in upcoming titles. We've also expanded our library of Fidelity FX features to work hand in hand with ray tracing, compute, and shader effects to enable the higher level of visual fidelity while ensuring high frame rates. For DX12 Ultimate, we've added an optimized denoiser for ray tracing effects, and a variable rate shading algorithm that can adapt image quality based upon luminance and motion. We've also added a suite of compute-based effects to be used alongside ray tracing, like optimized screen space reflections and an optimized ambient occlusion. We're always looking to help developers with new initiatives and are already working on a super resolution feature to give gamers an option for more performance when using ray tracing. As of today, our AMD Fidelity FX supported games list has grown to 35 titles using a variety of our features. So, let's take a look at some of these new features in an upcoming game with never-before-seen footage from Counterplay Studios and their fantastic game, Godfall. Godfall is a brand-new third-person perspective, next-generation looter-slasher that challenges gamers to engage in high-impact melee combat as they hunt for loot, equip legendary armor, and defeat vicious enemies. Leveraging the latest DirectX 12 Ultimate API, Godfall features DirectX Ray Tracing, variable rate shading, and supports Fidelity FX CAS to deliver incredible levels of stunning fidelity. I personally can't wait to play this game, and I think it looks absolutely fantastic. Now, let's hear from a few more of our game developer partners about the work they've done with us on RDNA 2 and what you can expect in their games coming soon. Far Cry 6. I'm here to talk about Far Cry 6 and some of the new technologies we've been collaborating with AMD on to make our game the most immersive and beautiful Far Cry ever. We've been working together to take full advantage of the new Radeon Rx 6000 series and RDNA 2 architecture for best possible experience. We've been very impressed by AMD's latest tech and joined forces to bring Fidelity FX CAS, Dxr Ray Tracing, and variable rate shading to Far Cry 6. We're using VRS Tier 2 to use a compute shader to generate a control texture which analyzes the luminance and gives us control at an 8x8 tile level as to what shader rate we're going to be using. This enables us to render much more quickly but keep the same quality level. We're excited to team up with great partners like AMD to bring some new features to World of Warcraft. World of Warcraft is built on a custom engine using the DirectX 12 Ultimate API. Another great feature on the RX 6000 is Dxr Ray Tracing. Here you can see ray tracing evident in how the shadows are interacting with your character. What you're seeing involves incredibly complex computations on the RX 6000. This is a level of realism that hasn't been possible until recently. The RDNA 2 architecture and the Radeon 6000 series allowed us to introduce some of the latest DirectX 12 Ultimate technologies into our engine. Real-time ray-traced shadows allow us to introduce additional shadow casting lights into the scene that provide much more immersion and detail into the world.
Over the next few weeks, developers of these incredible games will show never-before-seen gameplay with gorgeous graphics that use a combination of ray tracing and fidelity effects running on the Radeon RX 6000 series graphics cards. Be sure to check out AMD.com starting tomorrow to see more. I'm happy to announce that the Radeon RX 6800 XT will be available on November 18th, starting at $649. But we are not done yet. Today, we are also announcing the Radeon RX 6800 with 60 compute units, a 1.815 gigahertz game clock with a boost clock of over 2.1 gigahertz. It will feature the same 128 megabytes of Infinity cache and be available with 16 gigabytes of GDDR6 memory with a board power of just 250 watts. The Radeon RX 6800 is a fantastic entry into 4K gaming, delivering more performance than the 2080 Ti, which was launched at $999. The 6800 delivers over 60 frames per second in all of these games, giving you the confidence you need to step into the 4K gaming experience. That same great performance extends to 1440p resolution, where the RX 6800 tears through the latest games, delivering about 18% more performance than the 2080 Ti on average. The Radeon RX 6800 will be available to gamers starting at a price of $579 on November 18th. Now, let's bring back Lisa to wrap things up. Bring back Lisa for $579 on November 18th. Now, let's bring back Lisa to wrap things up. Thanks, Scott and Laura. The AMD Radeon 6800 XT and 6800 deliver simply incredible 4K and 1440p gaming experiences. This is the power of RDNA 2. And once we add the smart access memory technology, gamers can even get higher frames per second when pairing Radeon 6000 GPUs with Ryzen 5000 series. Now, I saw online that some of you were wondering which big Navi product we previewed during our Ryzen 5000 launch earlier this month. For the record, that was the 6800 XT. But you know, we always save the best for last, and I always get the most fun jobs. So today, that means I have one more GPU to show you. We didn't stop with the Radeon RX 6800 XT. We knew that the RDNA 2 architecture could give gamers even more. I'm so excited to share with you for the very first time the AMD Radeon RX 6900 XT. Now isn't this just absolutely gorgeous? And you'll see that it's actually relatively compact for all the performance that it delivers. It's actually the same size as our 6800 XT card. Our top-of-the-stack Radeon GPU is built for the ultimate in 4K gaming performance. The 6900 XT combines 80 compute units with a 2.25 GHz boost clock to deliver even more performance at the highest settings. With 16 gigabytes of graphics memory, the 6900 XT is ready for the most demanding next-gen games. And with the power efficiency of RDNA 2, we've been able to deliver all of this with a total board power of 300 watts. Now, Laura showed you that we achieved a 54% generational improvement in perf per watt with the 6800 XT. With the 6900 XT, we improved things even more, hitting 65% more performance per watt over first-gen RDNA. I'm so proud of our engineers who worked incredibly hard to optimize every aspect of RDNA 2 to achieve this performance. Now let's see how all of this translates to gaming performance. Running at 4K with the highest settings, the 6900 XT looks absolutely fantastic. It's extremely competitive across the board, consistently delivering high frame rates in your favorite games. Just take a look at the performance we see against the competition in Battlefield 5, Call of Duty, and Gears of War 5. All of this is at lower power with a smaller card form factor. Now, let's talk about price and availability. The AMD Radeon RX 6900 XT will be available on December 8th, starting at $999. You asked for AMD to bring the highest graphics performance to the gaming market, and we're doing just that. I hope you now feel that with the Ryzen 5000 series and the Radeon 6000 series, AMD is your best choice for your next generation PC gaming platform.
Whether you want a game with ultimate performance and AAA titles at 4K resolution, or you're an esports fan who needs incredibly high frame rates and responsiveness, across the board, for every gamer, at every price, AMD has the CPU and GPU combination for you. So I hope you're as excited as we are. We can't wait to get these products in your hands. So look for the Ryzen 5000 series starting November 5th, the Radeon RX 6800 series starting November 18th, and the Radeon RX 6900 XT starting December 8th. To wrap up here, this has been quite a journey for us, and I'm incredibly proud of our CPU and GPU teams who have worked years for this moment. AMD is delivering the best to the industry. We want to thank all of you for your passion and enthusiasm and for always pushing us to be the best. भाई हैट्स ऑफ टू यू लाइक प्राइजेस देखो यार लाइक एक 3080 के प्राइस में आप 3090 के परफॉर्मेंस दे रहे हो बट या कुछ चीज़ें होती है जो बहुत ही मैटर करती है लाइक अगर मुझे आप पूछोगे कि मैं क्यों एनवीडिया लूँगा AMD क्यों नहीं लूँगा मैं हूँ एक बजट गेमर और बजट गेमर्स लो बजट की भी बात छोड़ दो लाइक मुझे एनवीडिया क्यों चाहिए बजट की छोड़ दो बजट की कोई टेंशन नहीं मैं 1,65,000 देने को तैयार हूँ MSI का 3090 लेने के लिए जो गेमिंग एक्सट्रा है 3 फैन वाला ट्रिपल फैन वाला वो ग्राफिक कार्ड लेने को मैं तैयार हूँ ठीक है तो अभी बजट की इशू नहीं है इधर सपोज देखते हैं अगर इसमें बजट की इशू नहीं है तो ऐसा क्या चीज़ खास बनाता है एनवीडिया को बिकॉज देखो मुझे उनका ब्रॉडकास्ट जो ऐप है वो बहुत अच्छा लगा लाइक विदाउट ग्रीन स्क्रीन के ब्लर इफेक्ट्स और वो इफेक्ट दे सकता है बट वो मेरे चीज़ नहीं थी बिकॉज मैं फेस कैम तो बिल्कुल नहीं करता जो दूसरी चीज़ है वो मेरे लिए है नॉइज़ कैंसलेशन सो अगर मुझे नॉइज़ कैंसलेशन करना है तो मुझे इसका सॉफ्टवेयर लेना मतलब चाहिए होगा तो उसके लिए फिर GPU तो AI नॉइज़ कैंसलेशन जो है मुझे बहुत हेल्प करेगा बिकॉज मेरे दिन बहुत आवाज़ आती है रूम में आप भी अगर देख रहे हो कि फ़ैन चल रहा है मेरा फ़ैन की आवाज़ माइक में कैप्चर हो रहा रहेगा या नहीं हो रहा रहेगा आई डोंट नो क्या पता हो रहा है या नहीं हो रहा रहेगा सो इसलिए फिर मुझे चाहिए ये सब चीज़ें फॉर माई बेसिक सेटअप और इसके लिए मैं RTX 2070 भी ले लूँगा 2070 या 3070 या 3060 भी ले सकता हूँ इन फ्यूचर में भी आई डोंट नो सो इस ऐसी चीज़ें जो रहती है ना ये बहुत ही मैटर करती है लाइक बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर AMD भी कुछ ऐसे ही है इससे बढ़कर और कुछ चीज़ें देता तो बात कुछ सही थी बिकॉज देखो बहुत ही OP चीज़ होती है ये सब लाइक ये जो टेंडेंसीज होती है ना लाइक ओवर पावर्ड लाइक जो ग्राफिक कार्ड है जिस प्राइसिंग में आ रहे वो बहुत ओवर पावर्ड है लाइक OP है वो हाँ अगर मैं आपको लिटरली लाइक प्राइसिंग दिखा दूँ एक $579 के 1600X में सो हम लोग लिटरली में देखते हैं $579 इन रुपीज़ ठीक है अभी लिटरली प्राइस टू मैं बता देता हूँ लाइक कैसा है ये यार इंटरनेट मेरा हो रहा है क्या भाई लाइक यस तो देखो 6800X की प्राइस 6800X देखो इतना लाइक अगर इसको करे तो GST और ये सब मिला के लाइक 40-50 जा सकता है इतना और अगर मैं सपोज $999 इन रुपीज़ भी करूँ तो भाई उतना ही होता है लाइक 1000 को भी करेगा तो इतना ही होगा लाइक हाँ फॉर एक्यूरेसी ये 74 है तो ये 80 81 82 ऐसा मेरे हिसाब से करेगा या उतना 85 चलो 85 मैक्स लिमिट रख देते हैं 85 से ज़्यादा ₹1 नहीं बढ़ सकता इसका तो पता चला और इधर देखो क्या हो रहा है 3090 डेड देख रहे हो GG AMD ग्रीडी एनवीडिया लाइक भाई बाय एनवीडिया और रिप 3090 बायर्स देख सकते हो राइज ऑफ द AMD रिप एनवीडिया F फॉर एनवीडिया लॉल शिट रिप AMD यार क्यों लिख रहे हो यार AMD का हेटर रहेगा इसलिए बट यार रे ट्रेसिंग के मामले में अगर AMD घुस चुका है बहुत अच्छी चीज़ हुई है ये तो मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मुझे मिल गई है और मैं इससे ज़्यादा करूँ भी क्या लाइक मुझे ज़रूरत रे ट्रेसिंग की है भी नहीं मेरे पास देखो फ्रीजिंग मॉनिटर है नहीं मैं TV यूज़ करता हूँ बिकॉज डिस्प्ले मैं उतना उस टाइम पे जब भी मैं लिया था मॉनिटर तभी वो मेरा एसर का था एसर का कुछ ये एसर नाइट्रो VG240Y मॉनिटर था 23.8 इंचेस का
5 हर्ट्स के रिफ्रेश रेट का 1080p गेमिंग मॉनिटर था। वो मॉनिटर में क्या होगा, कुछ इश्यूज होते लाइक वो जब मैं कुछ करता था वो बंद चालू लाइक होता था, पावर ऑन ऑफ एंड ऑल, तो मैं इसको रिटर्न कर दिया। और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा बड़ा डिस्प्ले साइज चाहिए, तो मैं लेनोवो का सोचा। उसके बाद मेरा वो उस टाइम पे मुझे सिर्फ डिस्प्ले साइज़ के पीछे में पड़ा, तो मैं इस चीज़ को भूल गया कि लाइक फ्रीसिंग नाम की भी चीज़ होती है जो अपने मॉनिटर्स में होना चाहिए। मैं उस चीज़ को भूल गया, मैं सिर्फ डिस्प्ले साइज़ के और एक आईपीएस अच्छे पैनल के पीछे जाने लगा। सो मेरे लिए एक यूटिलिटी ऑप्शन तो मुझे मिल गया फिर। और मैं इतना कोई हार्डकोर गेमिंग नहीं करता हूँ, लाइक मैं गेमिंग करता हूँ, वैलोरेंट खेलता हूँ मैं, और बस वैलोरेंट खेलता हूँ, रॉकेट लीग, रोग कंपनी, जो ऐसे गेम्स है लाइक नॉर्मल सी गेम्स है वही खेलता हूँ फॉर माई फन। लाइक मैं कोई हार्डकोर ई-स्पोर्ट्स गेमर नहीं हूँ, लाइक कुछ नहीं हूँ, मैं अपने फ़न के लिए गेम खेलता हूँ। थोड़ा सा लाइक प्रैक्टिस एंड ऑल कर देता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज पीसी स्पेसिफिकेशंस लाइक करने जाऊँगा तो मेरा ना गेम अच्छे चलेगा ना कुछ। तो फिर यही जो चीज़ें हैं लाइक मेरे रिक्वायरमेंट्स जो थे, और फिर ये और लिटरली में लाइक AMD ने कुछ किया है इस बार। और AMD ने क्यों अपने CPU के प्राइसेस बढ़ाए, तो सिंपल ऑप्शन या आंसर मैं बोलूँ, आंसर इज़ द परफेक्ट टर्मिनोलॉजी फॉर दिस। सो इसका आंसर है प्राइसिंग का जो आंसर है प्रॉपर टर्म और डेफिनेशन में बोलूँ तो ये है कंपटीशन। यस भाई देखो, AMD ने इंटेल को टक्कर दिया, इंटेल को बीट कर दिया। इंटेल ने कुछ कंपटीशन दिया ही नहीं AMD को इतना अच्छा सा, लाइक क्या यार, लाइक जेन 3 के सीपीयूज में, चलो जेन 3 के सीपीयूज में कंपटीशन दिया ही नहीं, तो फिर AMD तो सोचेगा भाई ये तो इंटेल कंपटीशन दे रहा नहीं है, हमने प्राइस बढ़ते ये लोग का क्या होगा, ये लोग को लेना है मतलब लेना है, तो ये लोग वैसे ले लेंगे। हाँ, और 5800X क्या बकवास CPU है, लाइक CPU बंदा भले ही अच्छा है, CPU अच्छा बना है, बट प्रॉब्लम हुई है उसके प्राइसिंग को लेकर। लाइक आपका जो 5600X है, 5600X की जो प्राइसिंग है, लाइक आई एम नॉट श्योर, मैं भूल गया उसकी प्राइसिंग। 5600 की जो प्राइसिंग है अगर आप देखो तो $299 है, यस यस $299 है 5600X की। और जो 5900X है उसकी प्राइसिंग लगभग कुछ रहेगा, इतना तो कुछ नहीं पता डॉलर्स में अगर मैं ढूंढूँ। सो 5900X की प्राइसिंग मेरे हिसाब से रह सकती है लाइक थोड़ी सी, लाइक वो महंगा ही था। 5900X की जो प्राइस है वो थी क्या थी यार, 549 कुछ ऐसा कुछ डॉलर्स था, $549 था, ठीक है। और किधर आया $399, ठीक है। और जो 5800X है Ryzen 7 वो है $499। सो आप एक $300 और ये 550 पकड़ लेते, लाइक 549 तो $550, फिर 449 यार, क्या यार $450 पकड़ लो, ये 99 पता नहीं क्यों लगाते हैं यार, लिटरली में मेरा कभी कभी दिमाग ख़राब हो जाता है ऐसे कंडीशंस में, ठीक है। सो मैं अगर बताऊँ तो जो 5900X है, और मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ, तो चलो AMD Ryzen 9 5900X प्राइस, ठीक है। ये किया प्राइस, भाई वो वाला प्राइस स्टार्ट क्यों नहीं आया भाई, यार इसमें मैंने वो नहीं लगाया था तो प्राइस स्टार्ट आया। भाई तो मुझे प्रॉपर चार्ट बताना, एक प्रॉपर AMD Ryzen 3 CPU प्राइस। भाई मुझे डॉलर्स में प्राइस चाहिए थे भाई, मतलब Zen 3 की प्राइसिंग पूछी यार मैंने इससे, छोड़ो यार इस चीज़ को। तो मैंने अपने दूसरे डिस्प्ले पे खुल के रखा इस चीज़ को, लाइक दूसरे लैपटॉप पे। अगर मैं अपने मेरी इंस्टा स्टोरी देखी होगी तो उस पर आपको पता चलेगा कि मैं कौन सा दूसरा डिस्प्ले लैपटॉप के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इधर क्या है कि 5900X की प्राइस है $550, और इसकी जो है वो है कितना डॉलर्स है, $450, ठीक है। $100 का गैप है, और जो लाइक आप प्राइस 5600 है, लाइक $300 और $400, लाइक देखो यार $150 का गैप है उसमें, ठीक है। $150 में आपको सिर्फ 2 कोर और 4 थ्रेड एक्स्ट्रा मिल रहा है,
ठीक है। अगर आप यही $150 को थोड़ा और ऊपर लेके जाते हो, लाइक थोड़ा बजट इंक्रीज करते हो, लाइक 449 से 549 पे जाते हो, लाइक 550 पे जाते हो, तो आपको ये जो 8 कोर की जगह 12 कोर का CPU मिलेगा 24 थ्रेड का, 16 से डायरेक्ट 24। और आपके ये जो $150 है, अगर आप जो ये $150 आपके सेव हो जाएंगे, कैसे आप $200 एक्स्ट्रा डालो आपके $150 काइंड ऑफ सेव हो जाएंगे। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लाइक आपको अभी मेरा कॉन्सेप्ट जो है मेरे दिमाग में जो चल रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर यार देखो $300 है और ये $150 बढ़ गया इसके लिए, कितने के लिए, सिर्फ 2 प्राइस, मतलब 2 कोर 4 थ्रेड के लिए, बराबर। और अगर आप इसमें $100 एक्स्ट्रा लगाते हो और तो आपको कितना मिलता है, लाइक 6 कोर से लेके 12 कोर, लाइक डबल द परफॉर्मेंस और डबल द कोर्स एंड थ्रेड्स, ठीक है। जो आपको फिर जितना पैसा 5800X में डालना चाहिए था, लाइक सो उसमें से आपने अगर डाल दिया तो आपका पहले से जो $50 है वो सेव हो गए। अभी वो कैसे सेव है, बिकॉज आपको परफॉर्मेंस भी मतलब मिली उतनी, लाइक कोर्स और थ्रेड्स उतने मिले ना, तो प्राइस बढ़ी पर कोर्स और थ्रेड्स भी मिले, ठीक है, मिले। तो अभी ये जो इधर आपको कोर्स और थ्रेड से मिले, सो आपको लिटरली में क्या हो गया कि आपका अगर $250 एक्स्ट्रा जाना चाहिए था, उसमें आपको लगभग आपको लाइक $50 एक्स्ट्रा करने से आपको लाइक मिल गया यार एक अच्छा प्रोसेसर, और प्लस आपके $50 जो थे लाइक वो भी सेव हो गए। लाइक आपको मेरा जो मैं जिस चीज़ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा होगा, दैट्स फाइन फॉर यू ऑल गाइस, बिकॉज मैं थोड़ा सा लाइक अलग सोचता हूँ, लाइक थोड़ा काइंड ऑफ अलग, सो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट येस यू कैन लाइक एनालाइज इट। विश्रुत कुलकर्णी, हाई ब्रो, या हाई ब्रो। तो लाइक वैसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आपको समझ में नहीं आ रही है, आपकी गलती नहीं है, मैं बराबर से एक्सप्लेन नहीं कराऊंगा, तो फिर थोड़ा लाइक मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। अगर आपको आज की स्ट्रीम अच्छी लगी तो डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जैसे कि मैंने बोला आज का लाइक है मैं 15 लाइक्स का, और जितना हो सके उतना शेयर करना, व्यूज़ देते रहना। लाइक मुझे 60% लाइक 60 सब्सक्राइबर है, 50 व्यूज़ तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज यार इतनी मेहनत हो रही है। और इसके बाद कल भी आने वाला है, तो कल जब भी एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड लॉन्च होगा उसके बाद में मैं पहले AMD का वीडियो डालूंगा, उसके बाद एनवीडिया का वीडियो डालूंगा। हाँ, तो एक साथ में मैं नहीं इतना ये करने वाला, मैं पहले लाइव स्ट्रीम्स करूँगा उसके बाद ये करूँगा, सो टेंशन मत लेना आप। सो अगर आप कोई पसंद आया तो मैंने बोल दिया है जैसे कि, और ये लाइव स्ट्रीम देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव स्ट्रीम, और यस दैट्स द एंड ऑफ माई डे एंड ऑल दिस स्टफ। और अगर आपको ऐसी कुछ अमेजिंग कंटेंट्स चाहिए होगा तो कमेंट कर देना मेरे वीडियो के नीचे, आप मुझे DM कर सकते हो, या मुझे आप मतलब कॉल तो नहीं कर सकते लाइक, और हाँ इंस्टाग्राम पे प्लीज़ डोंट कॉल मी लाइक ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो आप मुझे मेल कर सकते हो और मैं मेल को रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा, जितने जल्दी होता है उतने जल्दी मैं मेल आपको कर दूंगा, या फिर मैं आपको जो क्वेश्चंस है वो इसमें ही उठा के, लेकिन Q&A काइंड ऑफ स्टफ में कर दूंगा। लाइक Q&A बोल सकते हो आप, अगर आपको Q&A बोलना है आप Q&A बोलो, अगर आपको एक बोलने का लाइक शॉर्ट एक जो डाउट सेशन है लाइक है वो हो जाएगा, बट उसके लिए भी आपको हैशटैग पूछना पड़ेगा, लाइक #PG मीन्स PC ज्ञान। सो जो भी डाउट है वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल होगा, तो मैं आपका ज़रूर कमेंट्स को पिक करूँगा। और बस आज के लिए इतना ही, चलो गुड नाइट एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय। सब अच्छा भी सो जाओ, कल सुबह बहुत एक अच्छा दिन होने वाला है, और कल वापस से लाइव स्ट्रीम होने वाला है यार, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे लाइक कभी कभी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।